इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग ने एक बड़े न्याय घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। इस हादसे में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिससे न्यायपालिका की गलियारों में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि न्यायमूर्ति वर्मा को भारत के पूर्व न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ का करीबी माना जाता है। इस घटना ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर कर दिया है। कैसे खुला भ्रष्टाचार का यह राज? कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक बंगले में अचानक आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली, जो कई बैगों में रखी हुई थी। तुरंत ही मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर न्यायपालिका में हलचल मच गई। इस घटना ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया। आखिर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई? क्या यह भ्रष्टाचार का संकेत था? और क्या इस मामले में कुछ बड़े नाम भी जुड़े हो सकते हैं? DY चंद्रचूड़ के करीबी होने के दावे क्यों? न्यायमूर्ति वर्मा का करियर हमेशा से चर्चा में रहा है। उनकी न्यायिक यात्रा में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का करीबी बताया गया। कहा जाता है कि जब DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे, तब कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायमूर्ति वर्मा को विशेष रूप में तवज्जो दी जाती थी। सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाई, जो सत्ता के ऊंचे तबकों को प्रभावित करने वाले थे। लेकिन अब जब उनके घर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई, तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें विशेष लाभ दिए गए थे, और अगर हाँ, तो उनके पीछे कौन था? तबादला और न्यायपालिका में बढ़ता दबाव। इस घटना के सामने आते ही तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक बुलाई और फैसला किया कि न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि न्यायपालिका के कई वरिष्ठ सदस्यों का मानना है कि सिर्फ ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों ने उनके इस्तीफे की भी मांग की, जबकि अन्य का कहना है कि उनके खिलाफ इन हाउस जांच शुरू होनी चाहिए। 1999 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच प्रक्रिया के तहत यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों के आरोप लगते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को उनसे स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो एक जांच पैनल गठित किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। क्या यह न्यायपालिका के फैले बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है? इस घटना ने न्यायपालिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायमूर्ति वर्मा का मामला यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। सवाल ये उठता है कि अगर एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिल सकती है, तो क्या न्यायपालिका के और भी बड़े पदों पर बैठे लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से न्यायपालिका के कामकाज पर जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगर जल्द ही उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे पूरे सिस्टम की साख पर असर पड़ेगा। क्या DY चंद्रचूड़ की भूमिका पर भी उठेंगे सवाल? न्यायमूर्ति वर्मा की DY चंद्रचूड़ के करीबी होने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पूर्व CJI की कोई सीधी भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि क्या वर्मा को कुछ मामलों में विशेष लाभ दिए गए थे? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण थे? अगर इस मामले की गहराई से जांच होती है, तो संभव है कि कुछ बड़े नाम भी सामने आए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है और क्या न्यायपालिका खुद को इस बड़े विवाद से निकाल पाती है या नहीं। आगे क्या होगा? न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अगर उन पर लगे आरोप सही साबित होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर इस जांच में और भी बड़े नाम सामने आते हैं, तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों में से एक साबित हो सकता है। ये मामला सिर्फ 10 साल से यह हो बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र पर सवाल उठाने वाला है। अगर न्यायपालिका खुद को इस विवाद से अलग नहीं कर पाई, तो यह जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है। आग की इस घटना ने विश्वास नहीं लोगों उजागर कर दिया है। सरकार से जुड़ चुका है और उनकी DY चंद्रचूड़ से करीबी भी जांच के दायरे में आ सकती है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जांच कितनी निष्पक्ष होती है और क्या सच सामने आ पाता है या नहीं। Groundbreaking ceremony of the new building was performed just day before yesterday. Couple of things, which I thought we can just flag, which we leave, of course, the state government to look at. ચંદ્રચૂડ બધા જેવા છે. One, we are given to understand that, પબ્લિકનો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો. in the same compound, you have the Annexi building.
You know, where in the olden days there used to be the city civil court which used to sit there. ગોંગુ Now you have, રાજસભામાં I think, ભેજો the two courts. That is, when I was there, there were two courts on the first floor and the second floor. Two courts and Fourth, now they're up to fourth floor. I'm told that that building now is in an extremely precarious situation, and virtually there are props which have been put up to sustain the building. Across from the High Court, just in the same complex, you have the PWD building, which again has some government leaders' offices and other things. That building is also in a very poor condition, and that is not perhaps a heritage building. So maybe if the government can examine, Dr. Saraf, if the government can, Mr. Joshi, you can request Honorable Chief Justice to have a meeting perhaps and see if, you know, those two can be redeveloped immediately. Because of course, you know, the handing over the land will take place in tranches, etc. So that if some effort can be made to, you know, to sort of redevelop the PWD building and the NXC building, then you will have a whole L-shaped corridor which can be used in the meantime in the next 3, 4, 5 years. And then, of course, the High Court shifts, it will be a facility which is there for whatever they can other use it can be put. Exactly. Because the High Court we can have a discussion with the High Court regarding this. You know, if there is any requirement of that, if that is possible, then Right. certainly look into it. And now that we have got the other buildings, like the Bank of India, MTNL, the CTO, some of the offices which are housed in the PWD building can be shifted there, so that the PWD building has to be redeveloped. Because those premises won't be subject to. Your office is also in that building, PWD building. Because the PWD building, as of now, which houses these offices, is not dilapidated. But if it requires a redevelopment, plus we'll have to find a substantial place where we can shift. Because in the Alex building also there are a large number of courtrooms. But we are happy to have a discussion lots with the High Court administrator. In the Alex building for a long time. Plus, I don't think it is dilapidated as of now. Joshi, what is the position? My lords, the report of VJTI says that though it is structurally stable, but it will require special repairs, is the report. And that is the building where props, etc. have been... It is in the PWD building of the side, adjacent to the side of Honorable AG Sir's office, which is the second and third floor where the protocol office and the inspection 2 branches are situated. The round stairs of wooden stairs. I don't think you can personally look into it. Ji, my lords? So Dr. Saraf is situated in that building, he can personally verify it. So No, as far as Alex building is concerned, at least Next seems to be okay. because Justice Naik, when you were Justice Naik, used to sit in that building for a long period. I sat in that building for a long period. You know, there was a reason why we sat in that building for a long period. The other courtrooms in the High Court were not air conditioned at that time. But the NHC building courtrooms were air conditioned. So we were among the first judges who got air conditioning courts in those days. And the Chambers were large enough. chambers were also large enough. So we were young judges, junior judges, but we got air conditioning courtrooms. Otherwise, everything goes by seniority, right, in the court system. I was Because we'll have a discussion with the Correct. 3.5. I actually had an umbrella one day in the monsoon, soon after my appointment, because at 3.5 floor, of course, later on it was renovated and everything. But we had a leakage in the monsoon, so my secretary also brought me an umbrella when I was sitting there, you know, in my chamber. What was going on? No, in the chamber. Okay, can you please examine this? We'll have a discussion with the High Court and plus we'll have an inspection done and whatever needs to be done will surely be done. It said that the groundbreaking ceremony for the new complex of the High Court of Judicature at Bombay has been concluded recently. Full stop. The process of redevelopment is being taken up on an ongoing basis by the Chief Justice and the senior judges of the High Court with the senior functionaries of the state government. Full stop. At this stage, during the course of the hearing, we have indicated, we have suggested that a meeting may be held between the Chief Justice and the senior judges of the High Court
in the administrative committee, and the chief secretary and other functionaries of the state government, including the learned advocate general, particularly having regard to the fact that some portions of the PWD and annex building adjacent to the High Court are in urgent need of repair. Full stop. The Advocate General may indicate the Advocate General's the offices of the Advocate General are situated in the PWD building, And all the government. and the government pleaders are situated in the PWD building. Full stop. Mr. Joshi, the Learning Secretary General of the High Court, has indicated that some part of the PWD building has had to be propped up to ensure its safety. Full stop. Whether the PWD building can be, and the annexed building can be redeveloped in the meantime, pending the conclusion of the wider project for the shifting of the High Court building to the Bandra, is an aspect which may be taken into account, which may be considered